कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं, एक घनी तन्हाई छा रही है, मंजिले रास्तों में ही गुम होने लगी, हो गई अनसुनी हर दुआ अब मेरी, रह गई अनकही बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। राह में रोशनी ने है क्यों हाथ छोड़ा, इस तरफ शाम ने क्यों है अपना मुंह मोड़ा, यूं कि हर सुबह एक बेरहम सी रात बन गई, है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी अब जिंदगी खाली खाली, लगने लगी हर सांस भी खाली, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन सुनो सुनो एक तराना सुनो नया, एक फसाना सुन रहा है जमाना, हो सुनो सुनो एक तराना सुनो नया, एक फसाना सुन रहा है जमाना, नए एक सफर पे चलो, सुनो 1024, सुनो 1024, सुनो 1024, सुनो, सुनो 1024, सुनो 1024, सुनो 1024, सुनो। India Matters, the weekly show presented by the Consulate General of India in Dubai.
For further information, you may contact the Indian Consulate at www.cgidubai.com and do follow them on Facebook www.facebook.com/indianconsulate.dubai. The BLS Center helpline number is 043594 Passport section helpline number is 043070741. The Visa section helpline number is 04-307-0743 and the Labour Wing helpline is 04-307-0716. Or you can call the Indian Workers Resource Centre, which is a Government of India enterprise for Indian nationals. IWRC is open all days with a 24-hour toll-free helpline number 800 India or 800-46342. Stay tuned to India Matters on Suno 1024. In the news this week. सुनो 1024 पर शुरू हो गया इंडिया मैटर्स। मेरा नाम है गगन मुदगल और इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस करूं, हम देख लें न्यूज में क्या हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी फाइनेंशियल एंड एलआईसी टुगेदर हैव फॉर्म्ड द कंट्रीज फर्स्ट $2 billion infrastructure development fund. The government has approved the deepening and widening of the channel leading to Mumbai Port Trust and Jawaharlal Nehru Port Trust at an estimated cost of $318 million. Indian startup Lava has announced its partnership with Intel to launch first Intel-powered smartphones under the brand name Zolo, and Infosys has entered into an MOU with the government of Maharashtra for developing a 142-acre facility at Nagpur. In the news this week. Indian Books of the Week. और सुनो 1024 पर इंडिया मैटर्स में बुक लवर्स के लिए बुक्स की खबर देने का टाइम हो गया। फिक्शन में है बुक स्वराज्यम बाय महिधारा रामोहोना राव, ट्रांसलेटेड फ्रॉम तेलुगु बाय वेगुंता मोहन प्रसाद, रिटन इन द 60s. This novel is set in pre-independent India. The responses of common masses to the changes that were sweeping the countries then make up by the fascinating study of why and how the national movement impacted Indian life. Non-fiction में South Asia Beyond the Economic Crisis, edited by Amitendu Palit, written in lucid prose. The central message of the book is unambiguous. South Asian is in urgent need of visionary leaders and fresh ideas because the region is at historic crossroads. और एक और book, The Many Careers of D.D. Kosambi, critical essays, edited by D.N. Jha. Indian Books of the Week. तो सुनो 1024 पर इंडिया मैटर्स में मेरा नाम है गगन मुदगल और ये जो शो है फ्राइडे के दिन जब भी 5 बजते हैं तो हमें ले जाता है इंडिया की गलियों में, इंडिया के त्योहारों में, फेस्टिवल में, और एक ऐसी धरती पर जिसका कल्चर इतना वाइड है, इतना रिच है। और जब भी मैं देखता हूँ मेरे सामने हिज एक्सीलेंसी कॉन्सल जनरल संजय वर्मा बैठे हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि या तो दिवाली है या न्यू ईयर है या होली है, बहुत खास ओकेशंस पे ही मुझसे मिलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में एक बार फिर। To all your listeners, this is the holy weekend. Also, International Women's Day भी अभी गुजरा है जी। और today we have a very very special guest, and I think it is an honor for the consulate to host and for Suno 1024 to host Mr. Subhra Das. He's the Executive Vice President Marketing and Customer Experience in the telecom company Do. True. और इनकी खासियत ये है जो प्रोग्राम में उभरेगी कि he is multifaceted. He is a great musician in himself. Okay. He's of course he's a graduate of 2 of the finest management institutes of the world. He's an engineer by profession, plays the guitar. A unique mind, and through this show I think बच्चे जो सुन रहे हैं या parents जो बच्चों को सलाह देते हैं about careers etc. I think today we'll try and prove कि you can pursue a passion and still be a very successful professional. So as the show goes on, ये खासियत आज के हमारे मेहमान की आज बाहर आएगी, and I'm looking forward to his replies as much as all our listeners are. ट्रू। सुनने वालों को बता दूं कि जिनका डेजिग्नेशन इतना इंटरेस्टिंग है वो खुद कितने इंटरेस्टिंग होंगे। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डू मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, मिस्टर सुब्रा दास सर, वेलकम टू सुनो 1024। Good afternoon, listeners, and happy Holi to all of you. His Excellency, Consul General, thank you for having me here, and thanks for the great introduction. Super. And nice to see you, Gagan.
थैंक यू सो मच। चारों तरफ संजय सर को भी मैं कहूं कि डू फेस्टिवल की बात है, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इंडिया से, पाकिस्तान से, दुनिया भर से आए हैं। आई वाज देयर एट राहत शो, जिस तरह का वेन्यू वो है, बहुत सारी बातें। और जो 15 को एक और शो होने वाला है, सारे शोज हो रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर सुब्रा दास, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कहाँ बड़े हुए, वेयर यू ग्रू अप, योर प्लेस ऑफ स्टडी, अबाउट योर फैमिली। Sure. I was born in Assam, in the northeastern part of India, and I grew up in a city called Guwahati and partly in Shillong, and then came to study in Delhi, and that's where I went to college. And then later on, I went to the Indian Institute of Management in Ahmedabad, and I came. My father was in the Indian Civil Service, Assam cadre, so he moved around quite a bit as well within India, and that's my upbringing probably in part of Northeast and then mostly in Delhi. Great. वही मेरा next question भी है. You've studied in two of the best business schools of the world and also in one of India's best engineering college. In the real world, very different from what they taught in educational institutions. Well, the educational institutions actually start preparing you for the real world, and you're equipped with knowledge and kind of a toolkit for how to navigate in the real world. And as soon as you enter the real world, you're of course faced with multiple different scenarios and situations, and multiple different kind of challenges and opportunities. And so in a way, what you studied in school and college kind of prepares you. But in a sense, that preparation is not only in the education, when you study in different schools and colleges. The preparation starts from, when you're a child growing up, all the different things that fascinates you, inspires you. True. And then you kind of find your own passion. And if you look at some of the visionaries of the world today, like Steve Jobs and Bill Gates come to mind, they all dropped out of college, but True. they followed their passion. So, and again, the preparation is actually a lifelong process of learning and continuously trying to do things and experimenting. बिल्कुल। कौंसिल जनरल की तरफ से और सुनो 1024 की तरफ से मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं फॉर बीइंग रैंक्ड इन द टॉप 25 ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोफेशनल्स इन द मीडिया, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन द मीना रीजन। अवार्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितनी जरूरत है इन चीजों की अकॉर्डिंग टू यू? Awards kind of, those kind of recognitions are good, and so they cap your the hard work and the effort that you've put in. But then you can't always rest on past laurels, so you have to keep moving on and try and accomplish, find your true meaning, of your life and work, and try and keep going forward and achieving your big dreams. बिल्कुल। कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया संजय वर्मा सर का एक सवाल है सर, आप ही करेंगे। डेजिग्नेशन की जो हम बात कर रहे थे, आजकल बहुत इंटरेस्टिंग डेजिग्नेशंस बनते हैं, तो आप सुब्रा से पूछ सकते हैं अबाउट दिस कस्टमर रिलेशन, कस्टमर, ये आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनती है। प्लीज आप ही पूछें ये सवाल। हाँ, this was fascinating when I had heard a lot about Subhra. I hadn't met him till last week, and it was good to put a face to the name. I'd heard about his musical talents and how much he had done for the company Do. And then when I saw his designation, it said Executive Vice President Marketing and Customer Experience. Now that's a new one for me as well. So let's ask Subhra, what is customer experience from his company's perspective? Sure. The customer experience essentially is all about designing and developing, how a brand interacts with customers across different touch points and different across the life, across the journey of a customer, when the customer comes in contact with a brand. So whether a customer is interacting with, coming to our shop, retail outlets, or our dealers, or calling our contact center, or going online, we kind of now look into a lot more detail in how that interaction is working. Is the customer really being served well? And we look at a lot of, we take care of not only the rational needs, but also look at the emotional needs of the customer. And so this whole customer experience is now a new movement, accelerated by the arrival of social networking, etc., when brands are actually finding out that they actually are not, they're losing control in a way, because any company or brand cannot control
what a customer might say in the social network. So you don't have much control on that. So he or she, based on an experience when he or she visits a shop or asks for a particular service over the phone, whatever that experience is, if it's a bad one, then it can, if the person goes onto social networks, writes about it, people get to know, and then the brand saliency and the brand kind of can get impacted. So one of the recognition is brands are kind of losing control and customers are really in control now, and this has been accelerated with the advent of the digital age and social networking, etc. And so one of the ways around it for brands is to make sure that the only way to navigate now is to make sure your internal house is in order, so that if you can manage to do that, the chaos outside and the dissonance outside would be under control, would be less. If your house is not in order, then the chaos outside could be multiple and your brand may take an impact. There's also the whole new concept now, which is, and the realization now that we are the 21st century is going to be a century of the experience economy, which means essentially when people's basic needs are met, then they are basically searching for more meaningful and emotionally satisfying experiences. And the good news about that is that allows companies and brands to another platform for differentiation, because price, product, performance are all getting to be similar. So what's different? So its experience then becomes a differentiator, and then you can also extract premiums for it. So there's a new wave, and this is probably recent over the last 4 to 5 months, and more so in the accelerated by the digital economy. And we as a brand, of course, need to be conscious about that. And so we're putting more attention to how are our frontline agents speaking to our customers. Is the interaction really designed well? And the whole thing about experiences, you have to design it well. It has to be thought through and staged as such. Because products are tangible, services are intangible, but experiences are memorable. So you have to really start looking at how you're serving your customers, how you're engaging with your customers in a completely different way. And so customer experience is therefore a new, is kind of a new field, probably getting more momentum in the last 2 to 3 years. And we at Do trying to be at the forefront of all the areas that we work within. We have kind of imbibed that whole philosophy and principle, and now we are making it work. सुनो 1024 पर यह है इंडिया मैटर्स. हमारे साथ हैं मिस्टर सुब्रदास, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस डू, जहां पर इनसे बहुत सारी बातें होगी. डू फेस्टिवल की बात भी होगी, लेकिन अभी सवाल है, और क्योंकि हिज एक्सीलेंसी कौंसल जनरल संजय वर्मा यहां पर बैठे हैं, तो ये सवाल मैं चाहूंगा कि वो जरूर पूछे लोगों से, और बदले में मैं आपको दूंगा अल मंसूर की ओर से 4 मूवी टिकट. सर, आज का सवाल आप ही से अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा. और साथ ही इन मूवी टिकट्स के अलावा 15 को एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सर्ट बुर्ज पार्क में होने वाला है, और उसके बारे में प्लीज अगर आप बताएंगे, देन हम सवाल पूछते हैं कि कौन कौन है आर्टिस्ट. तो एक जरा टीजर मिल जाएगा सुनने वालों को. Sure. 15th March को we have as part of the Do World Music Festival, which started day before yesterday, and we've had big crowds. Day before was Rahat Fateh Ali Khan, yesterday was Gypsy Kings. 15th we have Absolute India Ensemble, and what this is it's a whole fusion concept, East meets West, and we have a galaxy of Indian stars, Sonu Nigam, Kavita Krishnamurti, L. Subramaniam, Amit Kumar, Amit Chatterjee, all performing works of Pyarelal Sharma, Maestro Pyarelal Sharma, and this is the galaxy of Indian stars. We'd also have a lot of members from New York Philharmonic Orchestra, and led by a very famous conductor called Christian Yarvi. Wow. He's the permanent conductor of the London Symphony Orchestra. So it's going to be a great event, East meets West, fusion, a lot of Kishore Kumar, Mohammed Rafi songs, which were originally composed by Lakshmikant, the iconic duo Lakshmikant Pyarelal. True. And we're looking forward to that great event. ग्रेट. सो ये जो सवाल अभी सीजी आपसे पूछने वाले हैं, ये आपको मंसूर की तरफ से मूवी टिकट्स दिलवाएंगे. इसके अलावा इस जबरदस्त कॉन्सर्ट में जाने का मौका. सर, क्या है क्वेश्चन आज का? Question is, in 1977, okay, who started the society for music called Spic Mackey in India?
SPICMAC stands for Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst Youth. But we all know it in university and college, all over, even today. SPICMAC अलग-अलग cultural shows लाते हैं, classical shows music में. So who started SPICMAC in 1977? Now, that is the question which will get you movie tickets and tickets to the Absolute India show on 15th March. And let me say that this show on 15th March is probably the greatest collection of Indian musicians, classical and Bollywood, under one roof, under the baton of Pyarelal of the Lakshmikant Pyarelal fame. वाह, SPICMAC 1977 में किसने स्टार्ट किया था? बहुत सारे शोज दुबई में होते हैं, लेकिन ये अपने आप में एब्सोल्यूट इंडिया एक ऐसा शो है जहां पर बहुत अनयूजुअल आर्टिस्ट, ये कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे गाने जो आप रोज सुनते हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे. 3536 SMS नंबर लिख लीजिए, याद कर लीजिए. 3536 पर आपको ये आंसर भेजना है, या फिर facebook.com/suno1024 पर भी आप जा सकते हैं. सर, राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट हुआ डे बिफोर यस्टरडे. आई वाज देयर. इट वाज अमेजिंग, ब्रिलियंट वेन्यू, अमेजिंग म्यूजिक, Great atmosphere. So, which is your favorite Rahat Fateh Ali Khan number? I like Teri Meri. तेरी मेरी प्रेम कहानी for Mr. Subhra and for CG. सुनो 1024 पर यह है इंडिया मैटर्स. फ्राइडे के दिन 5 से लेकर 6 के बीच यहां बैठे फ्री में, विदाउट टिकट, विदाउट वीजा, आपको राजस्थान, आपको गुजरात, आपको दिल्ली, आपको बंबई, आपको असम, सबकी खुशबू आती है. सुनो. दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं. दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया. क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था. मुश्किल दो लफ्जों में बयां ना हो पाए. तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों
जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जाए, फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे, एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सुनो 1024 पर दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए, राहत फतेह अली खान की आवाज में गाना चल रहा है इंडिया मैटर्स में। शो कोई भी हो, सिंगर कोई भी हो, बात होती है अपनों की, बात होती है म्यूजिक की, संगीत की। और पिछले दिनों जो बात चल रही है चारों तरफ, उसके बारे में आपको बता दूं मैं, डू म्यूजिक फेस्टिवल। जी हाँ, परसों मैं बुर्ज पार्क पे था। मैंने राहत फतेह अली खान को एक बार फिर कुछ 6th या 7th टाइम परफॉर्म करते हुए सुना। इस बार कुछ ज्यादा मजा आया क्योंकि जो वेन्यू है वो अमेजिंग है, बुर्ज खलीफा के पास। इस मौसम में अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो फिर उसका कहना ही क्या। 15th को एक बार फिर एब्सोल्यूट इंडिया में सोनू निगम और प्यारेलाल साहब और बहुत अमेजिंग म्यूजिशियंस वहां पे होने वाले हैं। इसके पासेस जीतने का मौका आपको सिर्फ इस शो में मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। अभी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया संजय वर्मा साहब ने एक सवाल आपसे किया था 35-36 पर, कुछ जवाब भी आए हैं। सर एक बार फिर वो सवाल कर लिया जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर ये सवाल ध्यान से सुनो, जल्दी से आंसर भेजो 35-36 पर। बहुत सिंपल सा सवाल है कि 1977 में स्पिक मैके किसने शुरू किया था? स्पिक मैके इज द सोसाइटी विच प्रमोट्स क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमॉन्ग्स्ट यूथ। 1977 में स्पिक मैके किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए 35-36 पर। मेरे साथ है मिस्टर सुब्रदास, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस डू, जिनके लिए मेरे पास कुछ 3 दर्जन सवाल हैं, अराउंड 45। आप बिल्कुल, हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको? Great to be here. Because I understand जब इवेंट्स चल रहे होते हैं, you know, lot of work, lot of pressure, and Friday is a day where you want to relax with family or watch a film or whatever. So thank you for giving your time. Oh, thank you for having me here. One more question, breaking into this telecom market and, you know, establishing 47% market share within a half decade is a great achievement, any which way you look at it. How did your company manage to do this? ये इतना जबरदस्त किस तरह से आपने अचीव किया ये टारगेट? Sure. No, it's quite an unprecedented feat in the telecom world globally, because no other company has done something similar. True. We did it through a lot of doing things differently, a lot of innovations in products and services, a lot of innovations in our whole model and how we approach the market. A key interesting thing to talk about is we actually started going after the market in a different way. We started with the mass market. We started from the low end of the market, and then we gradually moved up. And that's normally how a lot of disruptive innovations start. They start somewhere at the bottom, and then they keep moving up. And so innovation's been a big part of how we've achieved what we've achieved. A lot of different. I can give many examples of different kinds of products and services and packages that we've launched. And I think a lot of this was made possible by the immense pool of talent that we've been able to attract. Do has now probably about people from about 70 different countries. My team has people from about 32 different countries, and they all brought with them different kinds of experiences and knowledge about how from their respective backgrounds. And so we were able to pull together all of this and create something really formidable. Great. One more question. You have worked in 4 different regions of the world: India, Europe, Africa and Middle East. 4 अलग-अलग part. How do you adapt? किस तरह से आप adapt करते हैं अपने आप को when you go different part of the world? It's important to have an open mind. True. And also, have the thrill for exploring,
new things and new opportunities. And also you need to have a lot of empathy and bonding with the local culture, with the local cultures, and you have to kind of be able to relate to people in those particular countries wherever you're working, and also have try and understand the markets in a very really very deeply. And so that calls for a lot of empathy and a lot of being able to relate to both the market and the culture that you are within. True. One more question about संजय सर से भी मैं शेयर करूंगा ये टाइम जब हमें एक फोन कॉल बुक करना होता था और 6-6 घंटे हम रुकते थे और फिर जोर जोर से बातें होती थी, वहां से एक रिटर्न कॉल आता था. याद है आपको टाइम आपने बुक किए ट्रंक कॉल्स? नो, आई रिमेम्बर जब हम जेएनयू में पढ़ते थे 86-87 में. True. To make a call back home to Bombay, we had to travel by this bus 6:15 from JNU campus to Connaught Place, Western Court या Eastern Court में वहाँ टेलीकॉम का ऑफिस था. वहाँ आधा किलो 1 rupee coins लेने पड़ते थे. Stood in a line and then you made that call, and look where we have come today. I mean, it's incredible progress in terms of communication. There are more phones in certain countries than people. I mean, True. 1.2 or 1.5 phones per person. So True. Incredible. Average family, जैसा कि आपने भी लिखा है, 3 to 4 phones in a family. Where do you see this industry heading now? The industry is essentially heading to a very digital world, where you see a lot of convergence of the traditional telecom with computing, with media, entertainment. So a lot of new kind of products and services are going to come to the market. We're already seeing it today with all the smartphones that are here. True. You kind of already start, doing what you used to do on your laptops and your computers. Now you do it on the smartphone, on the move, on the fly, anytime, anywhere. So a lot of new generation of, products and services, you already see them coming, enabled by very fast networks, very fast mobile networks. So you'll see a whole lot more of apps. You'll see a whole lot more of smartphones coming out and tablets and all this kind of new devices. You will also see a lot of convergence of how you consume video. True. Abhi aap mobile, abhi you watch TV, TV on your TV set at home. Yeah. You'll be probably now getting into a stage very soon where you watch TV on your laptop or your PC or on the phone, and you can dynamically move from one to the other. If you're at home, you're watching, you stop it. Your kids watching something on TV at home, you have to go out somewhere. You pause it or you stop it. You get into a car and you're driving. Your son and daughter is now able to resume and watch the same content. True. On the mobile while you're in the car. So a lot of different kind of, that's the whole thing about multi-screen convergence. So video, content, etc. You're now being able to converge now and watch it from different screens at different times. You'll also see a lot of new things on machine to machine. So Sanjay just mentioned about the number of phones probably soon become more than the number. It would exceed the population of population on this earth, and that we are getting to machine communication. So the projection is by about 2016, about more than 50% of the consumer electronics what we see would be communicating automatically between themselves. So you're driving your car, for example. That's another example where the car is automatically talking to the garage and the workshop, wow, giving full information about the status, etc. And then you get a message on your phone saying your next, this is faulty, you need to come and replace it within the next 3 hours. So all of those kind of machine-to-machine applications will become very big. और मेट को बोल भी देगी कि मुझे धो देना शाम को 5 बजे. सुनो 1024 पर चल रहा है इंडिया मैटर्स. फ्राइडे के दिन 5 से लेके 6, सैटरडे के दिन 12 से लेके 1 के बीच ये शो रिपीट होता है. स्टूडियो में हमारे साथ हैं कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया हिज एक्सीलेंसी संजय वर्मा और मिस्टर सुब्रदास, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस अब आज की जिंदगी में जब लोगों के पास टाइम नहीं है, स्पेशली जब आप एक बड़ी पोस्ट पे होते हैं,
तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मीटिंग्स, ऑफिसेज, इतना ट्रैवल करना होता है। मेरा सवाल मिस्टर सुब्रदास से ये है, और मैंने सुना है और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ उन लोगों से जो म्यूजिक के लिए इतना टाइम देते हैं। नाउ योर लव फॉर म्यूजिक, स्पेशली आप गिटारिस्ट हैं, यू आर अ रिकॉर्डिस्ट आर्टिस्ट इन जैज, फ्यूजन, रॉक, ब्लूज, और फिर आपको मास्टर्स की डिग्री भी मिली है बॉस्टन से। प्लीज टेल मी अबाउट दिस लव फॉर म्यूजिक, और आप टाइम कैसे निकालते हैं दुबई जैसी लाइफ में, जहाँ पे लोगों के पास हाई बोलने का टाइम नहीं है। Well, if you have the passion and you want to do something really satisfying and something that really gives you a lot of joy and gratification, then you'll always find the time. True. So I think that's the key thing: being able to really find your passions and then following them. True. So time should not be a constraint actually. बिल्कुल, जितने लोग सुन रहे हैं और जो टाइम की कंप्लेन करते हैं, प्लीज ये कंप्लेन आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ना करें। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आपको जो है टाइम निकल ही जाएगा। सर, आप भी जो है वो म्यूजिक के लिए इतना टाइम, आर्ट के लिए इतना टाइम आप निकालते हैं, आप इस क्वेश्चन पे कुछ लाइट डालना चाहेंगे? ये जो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं यार कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, मैं भी चाहता हूँ कि पियानो सीखूं या ड्रम सीखूं, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? आई एम इन द मेजॉरिटी जिनमें म्यूजिक की काबिलियत तो नहीं है, लेकिन म्यूजिक अप्रिशिएट करने की उत्साह, काबिलियत, कैपेसिटी है जी। I think we are that half of the world, or maybe more of us, who sustain music by sheer love. And हम बजाते तो नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं। लेकिन विभिन्न स्टाइल्स, शैली में कव्वाली हो, ब्लूज हो, रिदम एंड ब्लूज हो, सोल म्यूजिक हो, गजल हो, we listen to all types of music. तो अगर आप टाइम सुनने के लिए निकाल सकते हो तो बजाने के लिए भी निकाल ही पाएंगे। बिल्कुल। और सर की बड़ी अच्छी बात है, मैं देखता हूँ छोटे से छोटे इवेंट से लेके बड़े से बड़े इवेंट में वो रहते हैं और देर तक, आखिरी तक बैठे होते हैं। ग्रेट सर। मिस्टर सुब्रदास से मेरा सवाल ये है कि योर म्यूजिक सेंसिबिलिटीज एज अ पर्सन, यूर अ गिटारिस्ट, आपने सीखा है म्यूजिक, मार्केटिंग में वो कहीं आपकी हेल्प करती इस प्रोफेशन में? व्हाट यू डूइंग, हाउ डज इट हेल्प यू? किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं उसको? द कॉमन थिंग इज एसेंशियली creativity. You're creating things in both the areas. True. So whether it's music, you're trying to compose or create something new. The same in my work life. You're always trying to create, different propositions for customers, or trying to create things that add more value to your company. So that creativity is, I think, the common, theme across both the between my work life and music. I think that's a key factor given. A lot of the work that we do in our normal work on business, etc., is a lot of left brain thinking, a lot of analytical stuff, a lot of numbers. But today there's a lot of premium in the world on ideas. True. And ideas can actually move the world and create a new, unleash a lot of new solutions and innovations for the world and make people's life easier. So there's a premium on ideas, and that being the case, you probably need to figure out ways to reinforce your right brain thinking and come up with creative solutions to, whatever the task at hand is, whatever the problems or the opportunity is, you always got to be creative. That's where the premium is. ग्रेट। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सवाल मिस्टर सुब्रदास से करूं, आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड म्यूजिक जो फेस्टिवल चल रहा है, इसमें अगर आपको जाना है, कितने लोग इस सुन रहे हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं, मुझे 3536 पर बताइए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि आपको उस फेस्टिवल में जाना है। 3536 पर लिखिए, 3536 पर लिखिए सोनू निगम स्पेस आपका नाम और भेजिए, हम आपको जरूर कॉल करेंगे। और आपसे मेरा सवाल यह है कि व्हाई हैज योर कंपनी डिसाइडेड टू associate itself with world music? आइडिया कैसे आया कि एक फेस्टिवल किया जाए इतना ग्रैंड, इतना बड़ा? We had already embraced the music as a platform for engaging with our current customers and potential customers in the United Arab Emirates. And that whole platform, we call it Do Live. In fact, last year we did about 60 different concerts we had supported and promoted. And this whole embracing music as a platform, it stems from one particular philosophy that we have is, no matter who you are, where you come from, where you're going, there's some kind of music or some type of music that's really going to touch your soul. True. And I think this is also part of our giving back to our, to the community, and in many ways also promoting and celebrating the music and musical traditions of the different cultures and nationalities, you find in the United Arab Emirates. So that was a general thing that that was a philosophy behind Do Live,
Now, within Do Live, we figured we were supporting different kinds of concerts, whether it's rock or blues or classical or Arabic music, Indian music, Western music. Then we figured there is quite an opportunity for having one festival that brings all of this together, and that becomes a celebration of the diverse, music traditions. And we, gave it a name, Do World Music Festival, and so it's always this is our second year. True. It's a nice 7-9 days event, and we bring in artists from different parts of the world, representing different kind of music genres and different kind of music traditions. So that's the background behind Do Live and the overall live entertainment platform that we have crafted, and then one specific festival which we call the Do World Music Festival. Great. सुनो 1024 पर इंडिया मैटर सुनने वालों को बता दूं 15 मार्च के बारे में, एब्सोल्यूट इंडिया के बारे में। ये जो लिस्ट है, जो फेरिस्त है इतने कमाल के आर्टिस्ट की, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, अमित कुमार, त्रिलोक गुर्तू, अमित चटर्जी, बहुत सारे लोग हैं, पंडित विजय घाटे, पंडित भवानी शंकर, और इन सब के किंग, इतने सीनियर, इतने जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर जो रहे हैं, प्यारेलाल साहब भी रहेंगे। प्यारेलाल साहब की छत्र छाया में, उनके अंडर एक जबरदस्त शो 15 को होने वाला है। अब इससे पहले कि मैं मिस्टर सुब्रदास से सवाल करूं, आपसे मेरा ये सवाल है 35-36 पर, जो आपको एक कपल पास दिलवा सकता है इस शो में जाने का। इनमें से किसी भी एक आर्टिस्ट का नाम आप मुझे बताइए 35-36 पर और भेज दीजिए। जब तक मैं मिस्टर सुब्रा से पूछना चाहूंगा कि इतना यूनिक, इतना अमेजिंग आइडिया, हाउ डिड दिस आइडिया कम टू यू? ये कैसे कंसीव किया आपने? The idea of the 15th show. I'm talking the 15th show. The 15th show actually, we were looking at which are the different genres and different kind of artists we need to bring for the World Music Festival, because our intention was to try and experiment with new concepts, and of course East meeting West, that fusion concept was one of the things we were really eyeing on. And we got in touch with one of our very good friends, Subhra the CEO of Arcor Group. True. He already had a concept working, that was work in progress, essentially, is building up a concept of collaboration between Pierre Maestro and the Absolute Ensemble Group, led by the famous conductor Christian Zarvi. And so that's how it started. And then we tried to look at who all should, under this umbrella and the venture between Pierre-Lal Sharma and Christian Zarvi, we figured out who all should be part of it. And so that kind of evolution started, and we kind of, tried speaking to Maestro Pierre-Lal and had some suggestions, etc. So it's kind of started from, one conversation with Sudhakar Murthy, and then kind of evolved, and this is where we are. Superb. Do World Music Festival, 14 different musical styles, Qawwali se leke jazz, Arabic music, Western classical. Is there a common theme to all these 14 shows? Kuch ek common thought ya kuch hai behind this? Yeah, I think the common theme is about promoting unity amongst the different cultures, through music, exploration of the musical traditions of the different cultures. That's a common theme, trying to bring people from different parts of the world who are already resident here and mingle more and try and see each other's different kind of, musical traditions. So that's the whole underlying theme. Superb. सुनो 1024 पर इंडिया मैटर्स में हमारे साथ हैं मिस्टर सुब्रदास और कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी संजय वर्मा। बात हो रही है सोनू निगम की। सर, सोनू निगम का आपको, संजय सर से पूछता हूँ, कौन सा गाना पसंद है आपको? मुझे रात दिन संघर्ष का, या और कोई गाना जो आप सुनना चाहते हैं? एक छोटी सी झलकी मैं सुना दूं। विच इज योर फेवरेट सोनू निगम? यू लाइक दिस सॉन्ग मुझे रात दिन? या एक गाना मुझे बेहद पसंद है, वो मैं चला सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो दोनों की तो। बिल्कुल। मीनाक्षी फिल्म हुसैन साहब को याद करते हुए 2 कदम और सही, राहत इंदौरी साहब ने गाना लिखा है। वो आपके इंदौर से ही हैं? बिल्कुल इंदौर से हैं, और ए आर रहमान ने कंपोज किया है। सुनो 1024 पर इंडिया मैटर्स में। उम्र भर साथ रही दो कदम और सही, 2 कदम और सही, 2 कदम और सही, 2 कदम और सही।
सफर पाँव में है, दिल का आवारा दिया दूसरे गाँव में है। आओ चले हम वहीं, दो कदम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही। ख्वाब ढलते हैं जहां, दिल पिघलते हैं जहां, आओ चलते हैं वहीं, वो ज़मीं दूर नहीं, दोस्ती होगी वहां, रोशनी होगी वहां, उस उजाले के कदम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही। किसकी आवाज है सुन, ये नया साज है सुन, कौन देता है सदा, तो जरा राह वीरान सही, रात सुनसान सही, हर घड़ी साथ रहे, कितने गम साथ सही, थोड़े गम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही, दो कदम और सही। India Matters, the weekly show presented by the Consulate General of India in Dubai. For further information, you may contact the Indian Consulate at www.cgidubai.com and do follow them on Facebook, www.facebook.com/indianconsulate.dubai. The BLS Center helpline number is 043594 Passport section helpline number is 043070741. The Visa section helpline number is 04-307-0743 and the Labour Wing helpline is 04-307-0716. Or you can call the Indian Workers Resource Centre, which is a Government of India enterprise for Indian nationals. IWRC is open all days with a 24-hour toll-free helpline number 800 India or 800-46342. Stay tuned to India Matters on Suno 1024.
बिल्कुल सही कहा। सुनो 1024 पर स्टे ट्यून टू इंडिया मैटर्स, क्योंकि दो बड़े ही इंटरेस्टिंग लोग स्टूडियो में हैं जिनकी फ्राइडे की छुट्टी को जो है मैंने थोड़ा 1 घंटे के लिए छीन लिया, स्पेशली तब जब होली का माहौल चारों तरफ है। कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया हिज एक्सीलेंसी संजय वर्मा और मिस्टर सुब्र दास, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस डू। संजय सर से मेरा सवाल ये है, और ये एक्चुअली यूं कहना चाहिए मुझे कि संजय सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी जब गाना चल रहा था जो मुझसे कहा है कि मैं पूछूं, आज वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के मूड में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं सुब्रदास से पूछना चाहूंगा, और मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन ह्यूमन इमोशंस एंड म्यूजिक? माइनर स्केल जो होता है दे ऑलवेज साउंड सैड, मेजर स्केल में बहुत हैप्पी हो जाते हैं लोग। कुछ जो राग होते हैं बड़े सोबर होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत एनर्जी वाले होते हैं। वी चूज टू लिसन टू अ सैड वायलिन पीस और अ सैड मुकेश सॉन्ग। हम कभी कभी कवाली भी सुनते हैं और अपलिफ्ट हो जाता है मूड, या रॉक सुनते हैं। तो हाउ डज म्यूजिक टच टू अपोजिट इमोशंस? आप म्यूजिशियन हैं इसलिए ये सवाल आपसे है मेरा। Quite a difficult one, because I think whereas the phenomena is true, why it happens is probably still being explored, and as musicians you kind of know that it's true. If you do something on major scale and faster tempo, is more kind of leads to more happier responses, and if it is minor and slower tempo, then it's more more towards the sad kind of emotions. And if it is fast and then a little bit dissonant, it also causes fear. So of course there are different ways, and this is all kind of known recipes, if you will. But so the reasons obviously still, I think a lot of people talk about, there's a lot of researches happening about, brain scans and, looking at the responses of which part of your brain is responding how to different kind of musical stimuli. But my view is, it's all individual centric. It's who you are, what you kind of like, what inspires you. And you don't think too much. You shouldn't. Meaning you should just enjoy from the heart, and whatever moves you, if it is whichever genre it is, whether it's blues or classical or soul or whichever kind of genre and type kind of moves you, inspires you, touches your heart and soul, and you kind of just go with that. That's my whole approach to how I experience music, and whenever I try and compose something, it's all starts from certain kind of feeling within, and that kind of finds its manifestation through notes, and then the flow happens, so that's how I think it's more got to do with something more deeper inside you, which you feel, and something that excites you, and the same kind of a feeling internally kind of moves you to start creating certain kind of things, and kind of flows from within. सुपर। सुनो 1024 पर चल रहा है इंडिया मैटर्स, और बता दूं आपको 15 मार्च के बारे में, एब्सोल्यूट इंडिया के बारे में डू लेकर आए हैं आपके लिए इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ। सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, अमित कुमार, त्रिलोक गुर्तू, अमित चटर्जी, प्यारेलाल साहब। उसके पासेस यहाँ जीतने का मौका है आपके पास। 35 36 35 3600 SMS नंबर है जो 15 मार्च को आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाएगा ये शो। संजय सर ने एक सवाल किया था जो मैं चाहूंगा वो एक बार और कर ले, क्योंकि शो खत्म होने में 9 मिनट है और उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगले 5 मिनट्स के बाद हम विनर का नाम अनाउंस करने वाले हैं। सर एक बार फिर सवाल। Well, it's not इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है। If you are in your late 30s, 40s and early 50s, True. and if you have gone to university and college in India, जहाँ भी आप हों, बड़े शहर में, छोटे शहर में, you would have at least heard second hand, if not yourself had the pleasure of seeing a show organized by Spick Mackey. Essentially classical music explained in layman's terms, and providing easy and free entertainment. So who started Spick Mackey in 1977? Spick Mackey, for those who haven't heard this concept before, stands for the Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Amongst Youth. Essentially, it plays around college campuses and university campuses in India, and big names are performed. बिल्कुल। स्पिक मैके किसने स्टार्ट किया था 1977 में? अंकुर और वैशाली जो है वो सुन रहे हैं शो, और उन्होंने आंसर दे दिया है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ जाने के लिए। मैं जरूर आपको मौका दूंगा यहाँ जाने का। और बता दूं आपको कि इस बचे हुए 8 मिनट में मेरे पास बहुत सारे सवाल है मिस्टर सुब्रदास के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस डू हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे, डू यू फॉलो द इंडियन म्यूजिक सीन? हु आर योर फेवरेट इंडियन म्यूजिशियंस? आप किसे पसंद करते हैं इंडिया से अगर बात करें हम तो?
Yes, I do follow Indian music, both Bollywood and I'm trying to I'm trying to get into more Carnatic and North Indian classical music now, and that's something I've started following. But I like A.R. Rahman, I like Kailash Kher a lot, KK, Sonu Nigam of course, and of course Shan. Superb. Abhi, agar hum baat kare, can you give us a sneak preview on what is in store in Do's World Music Festival in 2013? 2013, we still are, meaning we have some basic thoughts about who all should be part of it, but our effort will be to keep maintaining the momentum that we've kind of built and make sure we have artists who've never kind of iconic figures or something. Both on coming from the east and the west. So we'll look at a lot of iconic figures. I can't tell you specific names because, still something we're thinking about. But our effort will be to make sure we have some very iconic figures from the east and the west, yeah. एक बार फिर मैं सुनने वालों को बता दूं मिस्टर सुब्रदास के बारे में, इतना सारा काम करने के अलावा, डू में इतना टाइम देने के अलावा, ही इज अ म्यूजिशियन, उन्होंने म्यूजिक सीखा है, बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करते हैं. इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि इफ आई एम ए म्यूजिशियन या कोई पार्ट टाइम करता है या हॉबी के लिए करता है, ये कैसे डिसाइड किया जाए कि अब फुल टाइम कर देना चाहिए या मुझे वैसे ही रखना चाहिए? ये जो पैशन को कैसे फॉलो किया जाए इफ यू आर अ यंग म्यूजिशियन? हाउ डज वन टेक अ कॉल ऑन वेदर यू आर गुड इनफ टू डू full time or give it up, or Sure, it's a very relevant question, a very common question. And I think it all depends on what your goals are, what you're going after in your life, and also your firm belief and conviction on your abilities and the confidence you have. If you feel that you have it and you want to pursue something and that you think and you believe based on also feedback from your family and your friends that this is the right path for you to do, and then you should go forward with it. And it's probably never a trade-off, because you should never trade off. You probably try and do music if that's really what you are after, if you think of it some other profession, but you should do where your heart is at. And maybe could be both. If you can do music and also have the same passion for your work. So you got to figure out what works for you, what you are after, and what's your belief and confidence and conviction on your own abilities. I think it's still a very difficult question to answer. This morning I was at the Emirates Book Festival and Chetan Bhagat was there, and question answer session mein he mentioned that 9 publishers rejected him before one agreed to publish his 5 point something. तो मेरा सवाल उनसे ये था, मैं पूछ नहीं पाया, but how does one decide whether you should try 8 times and then give it up, or try 9 times, or if you get rejected 9 times, should you go to the 12th or 15th? Can you get so obsessive or take that as a fair criticism that your work is not good enough, that it's been rejected 8 times? Somebody would have given it up after 8 times, but Chetan Bhagat did the 9th. True. And he was successful, and then he's carved out a unique niche for himself. So it's always going to be a difficult question to answer. Where does your passion become a profession itself? Is that your core advantage, and should you make a livelihood out of that? Meaning passion has to be a central part of what you're doing and why you're doing it. Passion has to lead that, and if you can be that sweet spot, it's so much better. But passion, there's also the other quality one would need is also to be very tenacious and have the tenacity to really stick to it. Try and it may fail at some point in time. It may take longer, but if you have the passion and the tenacity to follow that and the belief to follow that based on your own convictions, then it's something that comes from inside, that that this is your part and some very strong calling. You probably, the trade-off thing is probably something you should never do. Or meaning there's a lot of practical circumstances that can force you at times, but you should never give up on your core belief and your core passion. And if you can combine your passion and that staying power and the ability to pursue it, I think one profession may not suit you, but there is probably the other one where